हेलो कोडर्स, वेलकम बैक यू ऑल इन कोडिंग सर्कल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन ऑन विजुअल स्टूडियो कोड। ये हम लोग मेनली 4 स्टेप्स में देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा हम लोग का इंस्टॉल पाइथन, सेकंड स्टेप होगा इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड, थर्ड स्टेप होगा हम लोग का कनेक्ट पाइथन एंड विजुअल स्टूडियो कोड, एंड फोर्थ स्टेप होगा हम लोग का रन पाइथन कोड ऑन विजुअल स्टूडियो कोड। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग एंड प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए पहला स्टेप देखते हैं, इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे पाइथन डाउनलोड टाइप करना है। डाउनलोड, और जो आएगा डाउनलोड पाइथन, इसमें जाना है और यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है और यहाँ पे आएगा आपका पाइथन 3.14.0 वर्जन्स वाला हम लोग को डाउनलोड करना है, जो कि अभी लेटेस्ट है 2025 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ राइट क्लिक करना है, ओपन में जाना है और ये जो ऑप्शंस आ रहा है यूज़ एडमिन प्रिविलेजेस व्हेन इंस्टॉलिंग py.exe फाइल, इसको टिक करना है। ऐड python.exe टू पाथ पे टिक करना है और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में जाना है और यहाँ पे जितना भी ऑप्शंस है सब पे टिक कर लेना है। डॉक्यूमेंटेशन फाइल इंस्टॉल के लिए डॉक्यूमेंटेशन में टिक करना है। पिप फाइल्स इंस्टॉल के लिए पिप पे टिक कर लेना है, जो कि पाइथन पैकेजेस को इंस्टॉल करता है। और आइडियली पे टिक कर लेना है, जो कि आइडियली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करता है। और पाइथन टेस्ट स्विट पे टिक कर लेना है, जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंस्टॉल करता है। और पाई लॉन्चर पे टिक कर लेना है, जो कि लॉन्चर को इंस्टॉल करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एडवांस ऑप्शंस में आना है और इंस्टॉल पाइथन 3.14 फॉर ऑल यूजर्स पे क्लिक कर लेना है। और ये ऑप्शंस आप लोग ऐसे ही रख सकते हैं। और ये जो है कस्टमाइज इंस्टॉल लोकेशन, आपको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, नहीं तो एज अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। ये मेनली आपका फाइल का लोकेशन है जो डाउनलोड होगा। और इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपका पिन आएगा, पिन दे देना है। तो आप लोग देख सकते हैं पाइथन वर्जन जो लेटेस्ट है वो हम लोग का सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग क्लोज पे क्लिक कर लेंगे और इसको मिनिमाइज कर देंगे। चलिए देखते हैं पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को सर्च बार में जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करना है या फिर cmd, और यहाँ पे आपको पाइथन --- वर्जन टाइप करना है और एंटर कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं पाइथन लेटेस्ट वर्जन जो है 3.14.0 ये हम लोग का आ गया है। तो मतलब पाइथन जो है हम लोग का सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नाउ द सेकंड step is to install Visual Studio Code. First go to your web browser, then add a new tab, then type Visual Studio Code. Code install and go to the first website, code.visualstudiocode.com. Your system is Windows and Linux and Mac, then click on this, then click on this, and for Windows click on this. We can see here the file is downloading. The file is about 110 MB. Once the file is successfully downloaded, right click on this, open, and the first license agreement is came, and click on the I accept the license agreement, then next, then this is the file location. You can change it or keep it as then next, next. If you want to create a desktop icon, then click on this, then next, then install, and the Microsoft Visual Studio Code is installing. Now click on finish and minimize all this, and we can see that the Visual Studio Code is open. Or you can simply open from your desktop icon or type in the search bar Visual Studio Code. You can see this. So we can successfully install Visual Studio Code. So first come on Visual Studio Code, then go to file, then open a folder, then create a new folder,
suppose Ashish Python, then select this folder and accept the trust. Yes, I trust the authors, and click the and close the welcome. Now click on create a new text file and type the text file name is demo.py, and the .py is the extension for Python. We can install this earlier, so go to and enter this. We can simply create a text file. Now go to extensions and type here Python. Now go to first install packages, which is from Microsoft, and click on install. This is mainly used for to connect Python and Visual Studio Code. We can see that this is successfully downloaded. Here is uninstall button. Now go to text file and run our first program. Now type print bracket my name, or you can simply type anything whatever you want to print, suppose coding circle. Now save this file with Ctrl+S or from file tab and right click on the and run Python on file terminal. We can see that the output is come coding circle. Hence we successfully run the first Python code. If you find helpful this video, then subscribe our channel and follow for more tips and tricks like this, and like this video and comment Python ready to start. Thank you.